Yes, Srina. अभी अपना ये है कि what we have to do is that we have to find out for each node. For each this is the starting node. K equal to, for example, here we will find out the from a given node. We'll send an from a given node. K. Return the minimum time it takes for all the nodes to receive the signal. For all the nodes. For it to be possible for all nodes to receive the signal. Time it will take to receive. ये सेक्शन बेसिकली नंबर ऑफ विजिटर को ध्यान रखना मिनिमम टाइम मेरे ख्याल से पहले टोपोलॉजिकल सॉर्ट करेंगे अब टोपोलॉजिकल सॉर्ट करने के बाद हमें क्या पता लग जाएगा कि किस ऑर्डर में जाना चाहिए टोपोलॉजिकल सॉर्ट का फर्स्ट एलिमेंट फाइंड करके नंबर ऑफ विजिटर अगर सारे विजिट हो गए तो रिटर्न टाइम कर दो एल्स रिटर्न 0 ये अपना ऐसे ना टोपोलॉजिकल सॉर्ट में फर्स्ट सबसे पहले किया जाना चाहिए वो देखते हैं तो सबसे पहले किसे किया जाना चाहिए तो उसके लिए तो सबसे पहले टोपोलॉजिकल सॉर्ट का पढ़ ही लेते हैं आज तो हम साथ साथ पढ़ते भी जाएंगे तो मेन अपने को यही है टोपोलॉजिकल सॉर्ट हम का जो कोड है ना बेस्ट चैनल तो नहीं है ये भाई बहुत सही से करा रहा है पढ़ रहा है let me tell कोडर आर्मी के जो नोट्स है ना कोडर आर्मी ग्राफ आप इसे देख सकते हैं एक एक्स्ट्रा एज के लिए इसे फॉलो करने से बहुत सही रहेगा इसमें से आपको एकदम करेक्ट कोड मिल जाएगा तो मैं अभी खोल लेता हूँ टोपोलॉजिकल सॉर्ट डाइक्स्ट्रा एज अ कॉलेज स्टूडेंट टेक स्किल्स सीखना है लेकिन कौन सी टेक्नोलॉजी चूज करें कर दिया कौन सा ये 3 पे पहुंच गया ठीक हाँ जी 3 को विजिटेड मार्क कर दिया 3 ने कहा अब मैं कहीं नहीं जा सकता जब कहीं नहीं जा सकता तो क्या होता तो ये डीएफएस में मुझे क्या पास करना पड़ेगा भैया मैंने पास कर दिया इसके अंदर 0 ओके कि कहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं कॉमा मैंने इसके अंदर पास कर दिया अपनी एजेंसी लिस्ट मैंने इसके अंदर पास कर दिया विजिटेड और मैंने इसके अंदर सबसे पहले ये टोपोलॉजिकल सॉर्ट में क्या बोल रहा है कि आप एक विजिटेड एरे बना लीजिए वेक्टर ऑफ इन टोपोलॉजिकल सॉर्ट के लिए int n number of vertices और int vector of int of adjacency matrix okay what is given vector तो हमारे कहा कि वेक्टर ऑफ बोल एक विजिटेड बना लीजिए v और false से इसे इनिशियलाइज कर दीजिए एक स्टैक ले लीजिए स्टैक इंडेक्स और dfs को कॉल कीजिए 0 यानी स्टार्टिंग नोड से एडजेसेंसी लिस्ट देते हुए विजिटेड एरे देते हुए और पास स्टैक देते हुए और एक स्टैक इसको भी एज अ रेफरेंस मुझे भेजना पड़ेगा क्योंकि जो भी आंसर इसके अंदर स्टोर होगा वो यहां भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए ठीक है हां जी
ठीक है, अब मैं इस इसको थोड़ा सा सही करते हैं। ओके, आई होप विजिबल हुआ। तो जब हम डीएफएस करते हैं सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले हम विजिटेड मार्क करते हैं कि इस नोड को मैं विजिट कर दिया हूं। अब उसके बाद लुक एट इट्स नेबर विजिटेड 1 by 1। क्लियर? हाँ जी। तो नेबर को कैसे एक्सेस करूंगा मैं उसके जिस पे वो एज भेज रहा है? तो फॉर इंटीजर j इक्वल टू 0 हमें उसके नेबर को विजिट तो से j लेस देन एज इन लिस्ट में देखना बस। और नोड डॉट साइज जे j और प्लस ऑटो। तो यहां से मैं उनको एक्सेस इजीली कर सकता हूं। तो मुझे देखना है कि भैया कौन-कौन अभी तक विजिट नहीं हुआ है। इफ नॉट विजिटेड नेबर बिलोंग्स टू ये लिखता था मैं। हाँ जी, उसका नेबर कैसे निकालता हूं? एडिशन नोड j इस तरीके से मैं उसके नेबर को निकाल सकता हूं। ये उसका नेबर है, ये आपको दिख रहा होगा। हाँ जी, अगर उसका नेबर विजिट नहीं हुआ है तो उसके लिए डीएफएस कॉल लगा दूं। तो एडिशन नोड j मैंने भेजा, उसके साथ ही एडिशन लिस्ट कॉमा मैंने विजिटेड कॉमा और अपना स्टैक ये मैंने फंक्शन कॉल लगा दिया जो अभी तक हम डीएफएस में करते हुए आ रहे थे। तो एक बार मैंने उसके सारे नेबर को देख लिया, ठीक है? तो एक बार उसके सारे नेबर को अगर मैंने देख लिया तो लास्ट में मुझे क्या करना है? तो भैया खुद को पुश कर दो किसमें? स्टैक के अंदर उस नोड को। मैंने कहा था ना जब मैं अपने सारे नेबर को देख लूंगा उसके बाद मैं खुद को अंदर पुश कर दूं। विजिट नहीं कर रखा, अगर विजिट नहीं कर रखा तो कॉल करो ये बस, तो उसे विजिट करो, उसके सारे नोड पहले विजिट करते हो। इसमें किसको कॉल कर देंगे हम? सिक्योरिटी नेबर को कॉल करते हैं और बाकी तो पास कर देंगे और उस स्टैक में पुश कर देंगे इसको, नोड को। अब स्टैक में जो सबसे नीचे होगा वो फर्स्ट आएगा। तो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स भी आ जाएगा। ये तो सबसे पहले हुआ होना चाहिए। स्टैक के लिए टॉप में होगा, वो सबसे पहले करना चाहिए। टॉप वाला ही फर्स्ट है। सिर्फ विजिट करो फिर डीएफएस लगाओ। हमें डीएफएस लगानी पड़ेगी। यस, और 0 Peter if not visited। तो एक बार यहां से मुझे स्टैक के अंदर आंसर फाइनली मुझे मिल जाएगा। अब मुझे सिंपल इसको किसमें अपने आंसर के अंदर इस तरीके से स्टैक से करके मैं निकालूंगा आंसर डॉट पुट बैक q डॉट टॉप सॉरी s डॉट टॉप ऐसे निकाल देना स्टैक के टॉप एलिमेंट को और उसको बस फिर जो स्टॉप एलिमेंट है वो एलिमेंट तो कौन सा, तो हम टॉप एलिमेंट से करें, टॉप एलिमेंट से लेवल्स निकाल लेते हैं नंबर लेवल्स। सो टॉप एलिमेंट कैसे निकालने हैं अब हम? तो टॉप एलिमेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं? हाउ इज इट हैपनिंग? ओके, सो टॉप एलिमेंट निकालने के लिए, ओ ये तो डायरेक्टेड अनडायरेक्टेड ग्राफ थोड़ी है, ये तो वेटेड ग्राफ आ गया। ये तो डाइक्स्ट्रा वगैरह होगा, मिनिमम टाइम कि सबके लिए पहुंच जाए। अरे यार, चलो इसी बहाने हमने टोपोलॉजिकल सॉर्ट का कोड कर दिया। दिस वाज बैड यार, तो डाइक्स्ट्रा वगैरह है, तो अनडायरेक्टेड थोड़ी है। अनडायरेक्टेड वाले बात, अनडायरेक्टेड वाले पहले करने हैं ना अपने को। रिडंडेंट कनेक्शन देख लेते हैं, ये तो करेंगे ही, इसके लिए नया सीखना सीखनी पड़ेगा। In the cycle, a tree is undirected, that is connected and has no edges. Connected है, तो connected भी है, connected भी है, tree भी है, that is no cycle. Connected भी है और कोई cycle भी नहीं। You are given a graph that started as a tree with n nodes labeled from 1 to n with one additional edge added. The added edge has two different vertices chosen from 1 to n and was not an edge that already existed. The graph is represented by an array. ठीक है, indicate that there is an edge between here and there. A turn edge that can be removed so that the resulting is a tree of n nodes.
occurs last in the input. That occurs the last in the input. Now, what is it demanding? It is demanding cycle बन रही है. Detect a cycle. You have to first find how do we detect a cycle in this graph. How do we detect a cycle in this graph? How will we detect a cycle in an undirected graph? Basically, what we will do is that we'll maintain a visited array. We will maintain visited if and call the non-parent ones. It was already if it was already visited, then it has a cycle. This is the main concept. Now 1, 2, 3, 1, and then 2, 3. How is this possible? Find what the first thought coming in my mind? First thought which came in my mind after seeing that we have to find a connection or that thing like that is say 2 है 2 से 3 है 3 से 1 है कैसे create the adjacency list according to create the adjacency list according to the order तो इस तरह रिजल्ट रहेंगे नहीं उसी हिसाब से नहीं we have made this adjacency list according to its edges so what am I what I am thinking is that for all the nodes we will what we'll do is that for all the nodes we will iterate over all of the edges. Basically we will perform a breadth first search. For example we took the node 2 breadth first search. We will keep on visiting all the nodes which are not its parents. So for 2 for example I visited 3 and asked it to find 1. When 1 visited, then it thought that 2 was visited. So it returned
that one to two connection was adding a cycle. So we must start from the first node. Start from the node which came the first. Which came the first. As DFS should be started from the edge. This is what my main thought was. Now, after finding this, what's our concern? Basically, first of all, we will convert like we already do. We will make a adjacency list out of this. So making an adjacency list is quite an easy task. First of all, after making an adjacency list, for a particular node, we will perform the depth first search. And in that depth first search, we will keep on visiting, we will we will keep on marking whatever is visited. And we will not take the condition of neighbors as if not visited. No, we will instead take the condition that if it is not its parent, then call its depth first search. So let me write the form of a code. Find the center of a graph, and this all of this can come exactly the same thing because it is basically uh, now number of nodes would be the same. Now all the number of nodes have been found. After finding this number of nodes, after finding all of this number of nodes, and making the adjacency list, what is my task? My task is to perform a DFS. I will run a DFS from the starting node. From the starting node, now what I will do is I will perform a depth first search, and in this I will pass the edges of 0 0. That is the first I will call, and adjacency list I think probably should be made a this, and it should not be called like this vector of visited and visited and oh man, this is bad one. Now obviously this falls only. Now I will resize it to resize visited dot resize. Now adjacency dot resize. No, adjacency was called. Now the next step is to find out is to write a DFS call from this point. What I will do is write a DFS call from this point. Now this DFS call, what is this DFS call? For this DFS call, what is that for all of these nodes? Let's find out. I will find out. What I'm trying to say is that
we have made the DFS call. What we will do is that major portion is to visit it, visited of is to visit it. Now I have visited this node. Now I will call all of it for auto never belongs to adjacency adjacency of that node for all of its neighbors. I will call DFS for all of its neighbor. I will call DFS, and what I will ask? I will ask if it's and parent should also. Right? Equal to parent. Then I will call it. If neighbor is not equal to parent, then I will call it. But if in case if neighbor is not equal to parent for all the other ones and it's not visited also and it's already visited also, visited off, and if it's visited and if that neighbor is visited, then no calling. It is the edge between this which is making a confusion. So you must return what? So you must return the edge. Now I will make a tuple. Tuple you must say or here you must say the vector is quite good. I've initialized it. Answer dot if no answer, sorry, answer of 0 is the node and answer of 1 is the neighbor. Our neighbor is not parent, so then call as neighbor with the as node. Now difference from one node is connected, so we don't need to call overall no cycle. We added one, just one node. Okay, DFS was called and DFS resulted in failing that neighbor return, and my final will be to return the answer. Now what is main thought? Okay, it was quite simple only that
I will ask the Lord. And no lights, wow. What's wrong? वो it would be one in it. That's it.
watch is you know, deleting